Hall Kohima Day International Domestic Workers Day manaise. Assistant Labour Commissioner Kohima Zaremokikon guest of honor thakise. Tourism and Higher Education Minister Timjanimna Alongbra Kohima College Day Indoor Stadium inaugurate korise. It was stadium do UGC bra sponsor korise. Manipur Jamallade Mopra Union Minister of State for External Affairs Rajkumar Ranjan Singh laga ghor Imphal de jalai dishe Thursday rati. Prime Minister Narendra Modi bra Friday din G20 Agriculture Ministers kan ke global food security hasil kariba nimite kadam uthawale koise. Hello viewers, moi Lamika Achumi. Apni gan sob ke Nltv Prime Time de swagat kuri ase. Doibe ta khobor kan sai lobo. International Workers Day Kohima laga Francis Hall Day Friday din manaise. Team recognize decent work for domestic workers for their social protection and sustainable development bitore. Program ke Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Kohima bra ayojan koise. Aro BMZ and FDWA bra sponsor koise. Program day Assistant Labour Commissioner Kohima Zaremokikon guest of honor thakise. Kikon bra domestic workers support khota kan korise aro Central Sarkar bra domestic workers nimite schemes kan ula opor bi jankari dishe. SFS Church Angami Catholic Women Association President Medazu Marilyn Peniobra encouraging khota kan korise. CDI Coordinator Bokali Ekashibra domestic workers kanke schedule of employment bitore dhalibon nimite aro state domestic workers nimite minimum wage to fix kura opor memorandum Nagaland CM ke jama korise aro assistant labor commissioner ke bi dishe. Domestic work is one of the oldest occupation for women in world history. And it comprises a significant part of global workforce in informal employment and are among the most vulnerable groups of workers. They work for private households, often without clear terms of employment, unregistered in any book. As per the statistics, globally there are almost 76 million domestic workers and 76% of them are women. That's why I mean, because now domestic workers they play a vital role because now most majority of the domestic workers are from the women's sector. Because now it's not like those days domestic worker now the situation has changed. Our domestic workers and even the organizations worldwide, even the starting from the press, media, and from researchers, scholars, academicians, they're all researching, even from the ministry level, like they are finding ways for social security for the upliftment of the domestic workers, recognizing their works. Like there are so many social security programs. Social security program, the government there are so many social security programs can the unorganized workers, unorganized sectors, especially like domestic workers can give yada schemes can dhaligena jado tahang give do benefits can give power dibule itu government babi jado not from the state level but from the central level, from the central government level to push Korea. So there are lots of policy making. Once the policy has got, definitely it will reflect the state government also to accordingly implement these issues. The issue regarding this also, the amendment is there. The amendment is going on regarding the unorganized workers also and the child labor and abolition these things. So the process is already there with the government for amendment. So once the amendment comes into play, lots of these regulations and will come into effective. That I cannot say because the department we also pursue the file. So there are also like the file goes to lots of department like law and justice, also they examine the cases also. So there are meetings between the departmental and the high level stakeholders also. So we cannot assure that how long it will take, but definitely the file has already been moved. With the amendment, along with the amendment, the draft has already been put forward.
It's not in the initial state, but it's already in the process. Yeah, with the amendment. Yes. I think it was some years back, but maybe due to some issues regarding at times when we put up also, the file comes back to us for some changes through the law department also. So we make necessary correction. Dimapur laga SSC auditorium de Friday din International Domestic Workers Day manaise. Team All for One, One for All. Dignity and decent work for domestic workers bitode. Dimapur DC Sachin Jaiswal program de chief guest thakise. Advisor Priya Ashiambra topic dignity and decent work for domestic workers support speech dishe. In our country, in our state also, more than 90% काम करा मनोकान को अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोले तो ताकि इंश्योरेंस भी ना है, रेगुलर सैलरी भी ना है, और इनको पापले लगा इनको रूल रेजिस्ट्रेशन भी ना है, इंश्योरेंस का इनको ना है। तो इनका काम करा मनोकान को केडियाबा एक्सीडेंट भी हो पारे, केडियाबा मिसफॉर्च्यून भी हो पारे, क्योंकि इनका दुख लगा क्या है तो इनको क्या काम लगा इंश्योरेंस तो ना ठीक है। इधर इनका बिगेस्ट चैलेंज है सर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी मानो बीमार आसे, कोई तो अनलीव थके, एक साल तक 30 डेज लीव भी हो पारे, कैजुअल लीव भी थके, 7 दिन कैजुअल लीव भी हो पारे। पहले भी हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, स्पेशली डोमेस्टिक वर्कर्स को उन लोग बहुत काम करते ऐसे कायदे का मर्सी के भी है। तो अमकान ऐसा ऑफिसर नवले अलग टाइप की अमकान जो भी भाभी को लगे अमकान का कोर्ट पे सपोज अभी तो मॉर्निंग के ऑफिस ला बोले ऐसे अभी लगा हुआ है कि सुबह काम पे जा बोले ऐसे और कोर्ट पे जो भी छोटा बच्चा ऐसे और डोमेस्टिक काम इशू करते टाइम अनुसार काम ना है तो अमकान इनको कोर्ट को ना पड़ेगा हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम को दिया हुआ है। हमारा घर पे इलेक्ट्रिसिटी लगे, आबोले पानी लगे, आबोले रेट्स लगे, ये तो इम्पोर्टेंट है तो पहले भी इसको साल लगा फिर पूरा लगा सामान है पहले भी टाइम लगा सर्विसेज ये तो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सपोज हमारा एरिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्वीपर्स आते क्लीनर्स आते टाइम ना करके तो पूरा टाउन पूरा कंट्री को दिखा के हो जाते हैं। तो लाइक अगर कंट्रीब्यूशन तो हमारा क्या भी तो टाउन नौकरी को लगे तो का इंपॉर्टेंस को लगे एंड ऑफ द डे लाइक हम की सर्विस गिवर करते सर्विस ही प्रोवाइड करी है हमारा लाइक अगर मालिक ना हो लाइक हमारा नौकर ना हो लाइक की काम करी है तो लाइक हमारा ने इक्विटेबल लाइक हम के सैलरी होगी लाइक हमारा रेवेन्यू होगी की ऐसे ठीक ठाक टाइम पूरा दिगो लगे और टाइम के मोस्ट इंपोर्टेंट तो रिस्पेक्ट हमारे को ऑफिस आई ऐसे काम को ऐसे कुंबा आई ना हमारे गाड़ी में तो हमारे छुपा हो नहीं कुछ भी ना पाओ बिकॉज़ हमारे की जो पेट खाली हो कि ऑफिसर होगी यून होगी क्लर्क होगी सब जो आपको गवर्नमेंट सर्विस दे ऐसे सर्विस दी ऐसे पहले भी इवेंचुअली पूरा सैलरी पाई ऐसे तो फ्री पूरा सर्विस पूरा ना हो तो गवर्नमेंट सर्विस होगी दुकान का होगी एटलीस्ट हमारा सैलरी पाई ऐसे और उनको लोगों को रिस्पेक्ट नहीं लगे। मेरा बात है डिग्निटी एंड डिसेंट वर्क फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स यानी कि अच्छा काम अच्छी तरीके से घरेलू कामगार महिलाएं कैसे किस तरह से कर सकती है और ये उनका हक है। डोमेस्टिक वर्कर्स को अभी तक डिसेंट वर्क के रूप में हमने कहीं पे माना नहीं है। हम उन्हें वो रिस्पेक्ट वो डिग्निटी वो जगह नहीं दे पाए हैं जो उनका हक है क्योंकि डिसेंट वर्क अच्छा काम अच्छी जगह पे इस चीज को लागू करना कि जो घरेलू कामगार बाहर से आए हैं वो हमारे घर पे हमारे जगहों पे हमारे दिए हुए कामों को वो करती है जिन्हें हमें करना होता है और उनके सहारे हम अपना घर सुव्यवस्थित तरीके से चलाते हैं। UN Scale Up Opor Trainers Kanke 2-day state training the Hotel Vivo Kohima de shuru hoise.
Mission Director NHM Dr. Ritu Thurbra program de khota kurise aru kuise ki Ministry of Health and Family Welfare bra even aro co-win platforms kanopor a base kurigina routine immunization service to digitalize kuribole bhabana kuri ase itu logot tai akha janaise ki aha din de technology kan cholai gina state immunization coverage to aro bal hoigina age jabo. The beneficiary is through the ABDM facilitating through the creation of ABHA, Ayushman Bharat Health Account. So this is basically like the Aadhaar card. So each and every person will have a unique health account number, which is known as the ABHA. We have so many other portals which are reporting about the health and the healthcare delivery systems in all the portals. But somehow, all the apps are not talking to each other. But all the respective portals are not speaking to each other. One does not know what is happening in the other portal, but then at the same time, we have all the information which is up the health facility registry. Each and every health facility, whether it's private or public, will have a unique health facility registry which has to be done. The beneficiary is through the ABDM facilitating through the creation of ABHA, Ayushman Bharat Health Account. So this is basically like the Aadhaar card. So each and every person will have a unique health account number, which is known as the ABHA. We have so many other portals which are reporting about the health and the healthcare delivery systems in all the portals. But somehow, all the apps are not talking to each other. But all the respective portals are not speaking to each other. One does not know what is happening in the other portal, but then at the same time, we have all the information which is up the health facility registry. Each and every health facility, whether it's private or public, will have a unique health. Angami Students Union Bra Health Department are concerned contractors kanke Nagaland Institute of Medical Science and Research Periba Kohima de Takado academic classes shuru na hua agot joldi kam khotom kuribole janaise. Union Bra State Sokar aro Nodal Department ke dhanewad dishe. Nagaland Medical College laga sapna ke pura kura opor. Kintu Union Bra chinta janaise ki academic session do olop thake kina shuru hobole ase. Aro institute to itiabi full-fledged academic building papole baki ase. Irulogot asubra aro ekbar janaise ki grade 4 post kanto respective district laga indigenous inhabitants bra dhuribo lage. Kintu non-indigenous manukan bra dhuri ase kushe. Iropor union bra asai thakibo aro iniga kam nakuribole kadam uthabo kushe. Nagaland laga National Highway 36 stretch Dilai Gate bra Dobinala Jundo 2001 bra 2002 bitorde banai gena thakise itia ito rasta do bishi biya halate ase. Dilai Check Gate Indecent Highway Firing Range Oriental Colony PWD Supply Forest Colony Midland aro Dobinala area khan laga rasta de dangor potholes kan hua bra manukan ahaja kura do bishi duk pai ase. Irulogot monsoon season debi Panikan jama huigina ahaja manukan duk pai ase. Iropor Sal 2022 te Atta Village Council aro Dosta Colony Council bra concerned department ke ito opor kadam uthabole kuise hoilebi department bra nahuna nai nimite council bra kadam bi uthabo kuise. Itiata concerned department bra janta laga binti ke huni dia nai.
viewers kan mohan yedi aigna ase yedi no man's land de aigna ase mohan amikan yedi aha do mohan ini rasta khan kiniga ase kuna saigna aha dam de yedi mohan tiki pa ase yedi no man's land hobo ki Nagaland gate to agi de jai jase yedi mohan Assam aur Nagaland border te ase dia yedi dilai gate te ase to yedi sabi mohan gari kan aha dikhe ase rasta do pani do pura jama ho jase yedi fishery pond nisna ho jase rasta do itu Nagaland border ase Nagaland te entry grala rasta itu ase no man's land do aru mohan sabo pare mohan cameraman ekba turn gulibi itu Assam la rasta ase Assam la rasta te ekta gata bi nai itu mohan tikhi ase tu itu kunna responsibility ase tu aru mohan dikhabo bishi dikhawa ami khan itia itu ba start kona jado mohan pura line to dikhai dibo yede Rilan village ase Rilan village la ja laga rasta yede mohan ida inika jeshikuri to mohan indecent punchibo St John's higher secondary punchibo ase itu rasta to sabi itu rasta to ke type bhal na thake pani nopura din de holibi pani pura din de holibi itu pura flat thake itu ase mohan dikhi pai ase ita rasta mam biaba ase National Highway 36 te khara kona ase mohan itia yede to yede mohan dikhi ase yede welcome to cameraman ba dikhai dibi yede welcome to indecent kuna likhi gina ase to itu rasta do last year November month tv 8 village council aro 10 colony councils khambra bi takan government ke likha bi ase mohan tikhi paise last year November re takan itu one kuna ase government kan ke itu la rasta do jildi banai dibi kuna one kurse to hulibi eta tak uku nai itu la rasta la to uku sign nai uku banabi na banai to itu karne mohan aro dikhabo mohan itu rasta do itu stretch chado kiman dur tak stretch ana bia ase yede mohan dikise age de dikise no man's land itu Nagaland ketla osore rasta itu habsade Rilan de gusa laga Rilan laga itu te village la osore rasta do itu habsade yede mohan indecent de uthala rasta itu ase itu habsade mohan aro dinari de jabo itu rasta do ki karne iman neglect kona ase itu rasta do one of the best rasta thakise those days hulibi etia hoise it's been many years that itu rasta do etia tak pi kun pi touch nokona ase Dimapur 2 area do itu ahe aro itu kun ase Minister Tourism and Higher Education Timjanibna Alongbra Kohima College te Indoor Stadium inaugurate kurise. Friday din tweet kurigina Timjanbra kushiki Jawan Chukra Chukri Kanaga Holistic Development do Nagaland Sarkar laga khas dhyan ase. Aru ido por Indoor Stadium ke inaugurate kurise kushe. Iro moi taibra students kan ke taikan laga jivan de sports aru fitness ke barawa dibole anurod kurise. Along itu bi janaishi ki itu do UGC bra sponsor kura ase. Gahuri mangso item ke enhance kura aro gahuri mangso item laga supply rate to utha opor peak wholesale Dimapur bra representation dia karone Dimapur Municipal Council bra gahuri rate to revise aru refix kuri dishe. Gahuri mangso wholesale de rupees 215 per kg hobo. Gahuri mangso dress de rupees 300 per kg aro matha aro pet nari khan nishinado 260 per kg kuri dishe. DMC Administrator W Manpai Pombra order issue kurate prescribed rate kan maximum amount fix kurase aro ituke karabra gauri mangso bika manukan ke cholabole kushe. DMC bra gauri mangso laga dukan do norms hisapte sapha rakhibole aro gauri kata manukan bhal quality hygiene mangso customers ke dibole kushe. Kunbi gauri bika manukan itu instructions hisap jabole paria nai kole do tai khan khilaf kanun hisap kadam uthabo kushe. Dimapur Deputy Commissioner Sachin Jaiswal bra Thursday din first 1000 days of life launch kuise Chief Medical Officer's Conference Hall Dimapur de. Iro moi DC bra kuise ki alak district lagot compare kuri saile to Dimapur de do health facilities pabole asan ase. Idu lagot taibra locally sourced food aro homemade foods kan promote kuribole anurod kurise. Launching program pichide antenatal care services musboot kuribo nimite training be ayojan kurise. Advisor to Chief Minister aro Chairman Investment and Development Authority of Nagaland Abu Mehta bra Thursday din New Delhi de thaka Nagaland Emporium de jaise.
Deputy Resident Commissioner Wenye Konyak aro Nagaland Sarkar laga alak officials kan para abuke accompany korise. Iro moi metabra NHHDC laga officers aro staff kan lokot khota korise. Aro kinika ki kam chuli ase itu opor saise. Abu meta itbi janaise ki Pradesh Sarkar do Chief Minister Nipirio laga bitorde Emporium ke Nagaland aro Naga Manu laga ambassador banabole kam kori ase. Itu logo Taipra Emporium do revenue generate kura establishment ekta hobo lage koi kina anurodh korise. Monthly DPDP meeting DC office conference hall Chumongkiti Made Thursday din ayojan korise. Advisor Urban Development and Municipal Affairs Zaleri Obra meeting chair korise. Meeting de Dipupar A de Thaka Oracle School laga upgradation aro Paramount Educate Montessori School kuntu house pra approve kurigena thakise itu opor khota korise. Itu logot house pra khota kura pichide alag society registration bi approve korise. Union Minister of State for External Affairs Rajkumar Ranjan Singh laga ghor Imphal laga akongba de thakado kunaba miscreants pra Thursday rati de July dishe. Iro moi Ranjan Singh do Kerala de thakise. Hatsa opor afsos janaigena Singh kuishi ki 15 nishina miscreants pra tai laga ghor de hamla korise koigena tai khobor paise koise. Singh kuishi itu homoi ghor laga manu kunbi ghor de thaka nai. Ranjan Singh kushi jun bi itu violence te shamil ase tai khan desh opor biya kam kuri ase aro itu dikhai ki tai khan do manu laga dushman ase. Singbra community laga duta phale bi jamela nakurigena shanti banai rakhibole binti kurise. Sometimes some vested interested group wanted to use this religious card, but we totally against it, and there is no religious. If you say like that, more than many temples are also demolished. So the mob violence, mob violence, you cannot identify whether this is church or this is temple. Everything is there, demolished. More than 70,000 the peoples were displaced. This is not on the basis of caste, creed or religions. It's a mob. Because I already told you that I was working for the last 30-40 years for the ethnic harmony and self-respecting each other. There is no religious issue. We are free. India, is secular. Anybody can, any community can have their own faith. There is no restriction, not on that base. But this is unwanted and this is unguarded incident. Some of my houses were burned down. That is my own sweat, earning money. I am not a corrupt. Under the political regime of the Prime Minister, there was no one is corrupt in this regime. So I do not know, this is also mob. If it is a religion, I am a Hindu. Attackers was Hindu. It is not a religion. It's clearly proved that. So this is a mob. Now at the moment, luckily on that very night, my children are just arrived to Delhi. Otherwise, see, this is the second attempt. First attempt, I was there. So I requested the security advisor for prompt action. But yesterday, nobody is there. And then about nobody is there means my mothers and brothers are there. And then what happened, the earlier attack was in early evening, that was 8:30. Yesterday was about 10:30. So everybody is relaxed, and even the security, we cannot come up. Central government is responding promptly. Say, for example, extra security force, timely sent it. And even the ex gratia was only 5 lakhs for the life loss, now increased to 10. And the special package for restoration of those churches, the temples and houses and property loss, for that special package is given. And the central government is also constituted a peace committee
to bring the normalize. Central government is Friday pujur 4.8 magnitude earthquake Bangladesh te ahishe aru itupura Assam aru alak northeast jaka te bhi tremors to mehsus kurise. National Center for Seismology kwa hisab earthquake to 10:16 am de ahishe aru depth to 70 km takise. Kintu manumura nohole bi jokom hua khobor to nai. Hyderabad te G20 agriculture meet kura samay Prime Minister Narendra Modi bra Friday din G20 agriculture ministers kan ke global food security hasil kuribo nimite kadam uthabole kuse. Video message te PM Modi bra agriculture sector bra dukh samna kuri thaka opor khota kurise. PM kuse ki pandemic bra supply chain de diktari anado aro geopolitical jhamala bra biya kuri dise kuse. Itu nimite tai bra sobke marginal kisan khan opor dihan dikena sustainable or inclusive food system banabole rasta bisaribo lage kuse. Agriculture is at the heart of human civilization, and so as agriculture ministers, your task is not simply that of handling one sector of the economy. You shoulder a big responsibility for the future of humanity. Globally, agriculture provides livelihood for over 2.5 billion people. In the global south, agriculture accounts for almost 30% of GDP and over 60% of jobs. And today, this sector faces several challenges. The supply chain disruption caused by the pandemic have been worsened by the impact of geopolitical tensions. Climate change is causing extreme weather events more and more frequently. These challenges are felt most by the global south. Friends, I want to share with you what India is doing in this most vital sector. Our policy is a fusion of back to basics and march to future. We are promoting natural farming as well as technology-enabled farming. Farmers all over India are taking up natural farming now. They are not using synthetic fertilizer or pesticides. Their focus is on rejuvenating the Mother Earth, protecting soil health, producing per drop more crop, and promoting organic fertilizers and pest management solutions. At the same time, our farmers are proactively using technology to boost productivity. India's G20 priorities in agriculture focus on healing our one earth, creating harmony within our one family. Center Brand Nehru Memorial Museum and Library के Prime Minister's Museum and Society de budli kuribole faisla lwa apor Congress pra Friday din ninda kurigina mon khushi na thaka janaise. Prime Minister Narendra Modi ke khotabra hamla kurigina Congress President Mallikarjun Kharge bra kuise ki itihas na thaka manukhan pra dusra manu laga itihas khotom kuribole ulaise. Modi sarkar laga iniga chutu bhabna bra
कित्या भी जवाहरलाल लगा कंट्रीब्यूशन के कमती करिब ना पारिब कुसे सीनियर लीडर और कांग्रेस स्पोक्सपर्सन जयराम रमेश भी ट्वीट करिकिना कइसे कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दो जुआ 59 साल ओपर बरा बुक्स और आर्काइव्स लगा ट्रेजर हाउस होइकिना आहिसे और इटा बरा दो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी लगा नाम बरा जानी बोले आसे कोइकिना अफसोस जनाइसे जयराम कइसे कि इंडियन नेशन स्टेट लगा आर्किटेक्ट लगा नाम और पहचान के मिता बोले मोदी दो की होइले भी करिबो गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल बरा फ्राइडे दिन स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर गांधीनगर ते साइक्लोन बिपारजॉय आहा अपोर स्टेट लगा हालत अपोर खबर खान लुसे सीएम पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स खान के ताइखान लगा डिस्ट्रिक्ट लगा असर हुआ जगह खान दे सर्वे खान लो बोले कुछ आईएमडी पर थर्सडे राति दे कुछ कोस्ट दे सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हिट करिबो कोइगिना थाकिसे साइक्लोन बिपारजॉय आहा पर डिस्ट्रिक्ट दे इंफ्रास्ट्रक्चर खान बिया हुसे और gas electric poles kan abhangai kena kirise NDRF report hisab landfall bra 23 nishina manu jokom muise aru 24 janwar kan bi morise ejulogot landfall hua nemite duta manu morise 1,08,208 manu kan asar hua district kan bra evacuate korise district authority NDRF SDRF Indian Air Force aru alak official team bra IMD director Dr. मोहपत्रा कुशे की साइक्लोन बिपारजॉय दो राजस्थान नगा एडजॉइनिंग हिस्सा खानदे शाम फाले जाबो और बिशी डांगर पानी गिरिबो कुशे देखिए बीती रात बहुत ही चुनौती भरी हुई थी आज नई सुबह फिर वही उत्साह वही साहस के साथ टीम गुजरात ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है भगवान द्वारकाधीश और सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से सरकार की प्रोएक्टिव कामगिरी के कारण आज सुबह 8 बजे तक किसी भी प्रकार के कैजुअलिटीज की खबर नहीं है कुछ लोग जख्मी जरूर हुए हैं उनका इलाज सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल सरकार द्वारा कराया जा रहा है पूरे गुजरात में 22 जितने पुलिस के जवान हमारे जख्मी हुए हैं सेवा करते करते जख्मी हुए ये जवानों की इलाज भी अस्पताल में चालू है इस प्रकार की तेज हवा और बारिश के कारण कई जगहों पे बिजली के खंभे गिरे पेड़ गिरे और छपरे वाले मकानों को नुकसान हुए कच्चे मकान के भी गिरने की खबर आई है कल भारी बारिश और हवा के बीच में जब साइक्लोन जब लैंड हुआ तभी भी शहरों में जहां पेड़ गिरने की खबर आई बिजली के खंभे गिरने की खबर आई वहां पे गुजरात पुलिस एनडीआरएफ आर्मी नेवी कोस्ट गार्ड एसडीआरएफ और पीटीएफ की टीम ने साथ मिलकर अलग अलग जगहों पे पेड़ एवं बिजली के खंभे तात्कालिक हटाए तेज हवाओं के बीच में जिस प्रकार से टीम काम कर रही थी उनको देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि देश के एक एक लोगों को उन पे गर्व हो उस प्रकार का काम कल टीम ने किया है हमने देखा कि पिछले कई दिनों से सरकार ने समंदर के तट पे बसे हुए गांवों को हजारों लोगों को हजारों नागरिकों को स्थलांतरित किया और उनकी सभी प्रकार की व्यवस्था की गई कल पूरे देश के नागरिकों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगहों पे अलग अलग लोगों ने गुजरात के नागरिकों की सुरक्षा की प्रार्थना की गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जहां ये साइक्लोन प्रभावित नहीं है वहां के सेवाकीय संस्था जो है उन्होंने सरकार के लोगों के साथ मिलकर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में मदद की आज आप देख सकते हो कि सभी जगहों से लोग आके मदद में जुड़े हुए हैं सभी प्रशासन के लोग इतने ही एक्टिवली काम कर रहे हैं कल शाम को प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री जी से बात की मुख्यमंत्री जी का ट्वीट मैंने पढ़ा प्रधानमंत्री जी ने मात्र मानव जीवन बचाने की या उनकी चिंता नहीं की मेरे गुजरात के गिर में बसते हुए एक एक शेरों की चिंता उन्होंने की गुजरात के सभी प्राणियों की चिंता उन्होंने की
गुजरात के गांवों की चिंता की, गुजरात के गांवों के नागरिकों की खबर ली। देखिए, बीती रात बहुत ही चुनौती। Prime Minister Narendra Modi brought Thursday Sham Gujarat Chief Minister Bhupender Patel logot khota kurise. Cyclonic storm Biparjoy Gujarat laga coastal area khande aha piche halat kinika ki ase sabonimite telephone bra khota kurise. Modi bra Janwar Khan logot Gir Forest a lion khan laga safety opor bi kinika kam chuli ase itu opor khobor loise. Olympic medalist wrestler Sakshi Malik bra Friday din kuise WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh laga nam charge sheet ase. Itu logot minor laga case ase aro khor manukan opor bishi pressure ase. Sakshi tubi kuise ki taikan laga mang ke sarkar bra apura kura pichide hi kadam uthabole faisla lobo. देखो, कल चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है और बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है, 1-2 दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी, देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। मॉस्को की जो धारा है वो हटा ही गई है, इस पे क्या कुछ बोलेंगे आप? देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ। तो इससे तो क्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाव के कारण मतलब वो टूट चुके हैं। WFA के चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रिजभूषण की कोई भी कामनी से पार्ट नहीं देगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो हमारी पहली मतलब हमारी मांग थी कि फेडरेशन में उसके घर का कोई भी आदमी ना हो, दूर दूर तक का रिलेशन का ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई फेडरेशन का निर्माण हो जिसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं और जो फेडरेशन को अच्छा भी चला सकते हैं, कोई और अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। बस आखिरी सवाल कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या आप जंतर मंतर आएंगे या धरना दोबारा शुरू? क्लियर कर दूं कि एक बार चार्जशीट हमें दिख जाए और दूसरा 1-2 प्रोमिसेस जो गवर्नमेंट ने किए थे वो बाकी है। FIR जो उल्टी लेने का उन्होंने बोला था और 2-3 बातें थी, तो वो एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। Union Health Ministry bra Friday din data dia hisab desh te 96 fresh coronavirus case ulaise. Itu loigena eta active case to 2017 de khara ase. Ministry kwa hisab motwa case to 5,31,893 de khara ase. Itu logot desh te eta tak sob milaigena anti-COVID vaccine dose to 220.66 crore marigena ase. तो viewers, इचने में देखो बड़े माने ऐसे अपने गान सब साइट है कि भी नागालैंड TV।